Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are coping fairly well with this exam time. In this video, we are going to discuss memory-based question that came in 2/6 of January 21. Okay. So yeah, I'm fairly late, I would say, because of some reason I couldn't do it. But yeah, I will try to complete all those memory-based question of January 21, 22 as soon as possible. But in this video, first we are going to cover January 21 memory-based question. Okay. So देखो, it will be helpful if you are still to give the exam and you need to practice. Okay. And also for those who want to, I mean, who feel like they are already done with paper, but still they feel like they need to appear in the second term with more preparation and all. Okay. So yeah, let us go with this one. Find the dimension of a by b if this is given. So ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है. हर बार ही आया है ऐसे क्वेश्चंस, हर जगह आपको दिख जाएगा. सो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, जैसे जब भी आप दो चीज को ऐड करते हो तो उनका डिमेंशन सेम होता है. Done. So if this is pressure and this is AT square by B, then AT square by B should have dimension of pressure, right? So AT square by B is equal to, इसका जो भी डिमेंशन होगा विल बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रेशर. और प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो दिस इज इक्वल टू ml t - 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. सो दिस इज ml - 1 t - 2 एंड दिस इज टी स्क्वायर. सो ए बाई बी को आप अलग कर लो एंड दिस इज योर टी का स्क्वायर एंड दिस इज ml - 1 t - 2. सो दिस इज ए बाई बी and this is equal to ml - 1 and this is t - 4. So correct answer will be which one? It should be B. Okay. So yeah, this is sorted. और ये बहुत ही easy question, right? Now let us look at this one. Force acting on a particle is given by this. Mass of particle is given at t equal to 0. Particle is at rest, located at the origin. So initially it is at rest. U is equal to 0 and initial position is 0. Okay. Velocity of particle at 2 second, position of particle at 2 second. क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना. फोर्स हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, मास भी गिवन है. सो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो. जैसे अगर आप एक्सेलरेशन लिखते हो, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फोर्स बाई मास. फोर्स इज दिस, मास इज 4 kg, सो दैट विल बिकम टी क्यू आई कैप -3t² by 4 j cap. This is acceleration as a function of time. If you have to calculate velocity as a function of time, क्योंकि you have to calculate velocity at t equal to 2 seconds, simply you write a as dv by dt. And this will become tq I cap -3t² by 4 j cap. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना. तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मैं और दिखाती हूँ. dv इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tq dt. Okay, so this is in I cap minus this is your 3t² by 4 dt and this is in j cap direction. This is dv. Okay. Now put the limit. I mean at t equal to 0, if you are putting here t equal to 0, velocity is what? U, and u is equal to 0. So v is 0 at t equal to 0, initial velocity. At any time t, or we have to calculate at 2 seconds. So यहाँ पे आप 2 put कर दो and this will become what? Let's say v. So this v we have to calculate. Now you simply need to integrate. Integrate कर लो आप, क्या मिलेगा देखो. v is equal to this will become how much? T4/4 I cap and this is okay minus 3tq/3 into 4. Okay, this is j cap. This is as a function of time. Now if you need to calculate velocity at any time, put the value of time, you will be getting answer, right? तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना होने वाला है देखो. यहाँ पे अगर आप करोगे 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स करोगे, दैट विल बिकम हाउ मच, 16. 16/4 आई कैप माइनस 3 ऐसे भी कैंसिल्ड है. सो दिस विल बिकम 8/4. so this is 8/4 j cap. So this is equal to how much, 4 I cap minus 2 j cap. This is sorted, right? So velocity as a function of time you have got. You can calculate displacement as a function of time. जैसे v को क्या लिखते हो आप, dx/dt, and dx/dt is what we have got just now. Sorry, अभी अभी हमें क्या मिला, t4/4 minus, okay, so t4/4 I cap minus tq by something, मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ, tq/4, that is right. Yeah, so that is your tq/4 j cap.
ओके, दिस इज सॉर्टेड. नाउ यू सिंपली नीड टू इंटीग्रेट इट. 4 को कॉमन ले लो आप. dx इक्वल टू हाउ मच, 1/4 आप कॉमन ही डाल लो. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, t4 dt आई कैप माइनस हाउ मच, दिस इज tq dt j कैप. ओके, सो दिस इज दिस थिंग. नाउ पुट द लिमिट t इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो तो x 0 है, राइट? And then as a function of time you calculate it. Okay, at any time t, let us say this is x, so you will be calculating it. You will be getting, जैसे मैं यहाँ पे simply solve कर दूँ x, and this will become how much, this will become your t5 by 20 I cap minus this will become how much, t4 by 16 j cap. Now put the value, you will be getting the answer. So this is what you were required to do. बहुत ही simple question है. डन है. चलो आगे बढ़ते. टू स्प्रिंग्स हैव स्प्रिंग कांस्टेंट दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द परसेंटेज एरर. अब देखो, जब स्प्रिंग को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, आप उसको सीरीज की तरह ऐड करते हो. सो के इक्विवेलेंट क्या होना है तुम्हारा, k1 प्लस k2. Okay, and when you add two things, their absolute error gets added, right? So k equivalent क्या होगा तुम्हारा, 4 plus 2 6 plus minus इसका absolute error 0.1 है, इसका 0.1 है. So this will become, sorry, 0.2, right? So this is this. We have to calculate percentage error. Percentage error is what? Absolute error, that is 0.2 divided by value of that quantity, that is 6 into 100. Okay, so this will become how much? This will become 10/3, that is 3.33%. ओके, लेकिन क्या होता अगर ये पैरेलल में होता, क्योंकि सिर्फ टू में शायद पैरेलल का क्वेश्चन भी आया है. सो पैरेलल में आप कैसे निकालते, स्प्रिंग, सॉरी पैरेलल तो दिया हुआ है, सीरीज में होता तो क्या करते आप, जैसे सीरीज में स्प्रिंग को आप कैसे ऐड करते हो, 1/k इक्विवेलेंट को आप लिखते 1/k1 प्लस 1/k2, राइट? ऐसे कुछ लिखेंगे. अब ऐसे क्वांटिटीज के लिए हम कैसे निकालते हैं एरर, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, पीवाईक्यू सेशन भी लिया है मैंने, उसमें भी कई बार डिस्कस किया है. इनफैक्ट रे ऑप्टिक्स में भी ये आया है, और बहुत सारे केसेस में मैंने बताया ये चीजें. सो लेट मी रिपीट इट हियर अगेन. तो क्या करना है तुम्हें, सिंपली दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन करो. सो यहाँ पे k इक्विवेलेंट -1 is equal to k -1 plus k2 -2, sorry, -1. Okay, so this is this partially differentiating. So if you partially differentiate it with respect to itself actually, तो k equivalent -1 को k equivalent के टर्म में अगर करते हो तो क्या मिलने वाला है तुम्हें, -1/k equivalent का स्क्वायर डेल्टा k equivalent. दिस इज हाउ यू डू पार्शियल डिफरेंशिएशन. -1/k1 का स्क्वायर डेल्टा k1 -1/k2 का स्क्वायर डेल्टा k2. Okay, so this is how you will be writing delta k equivalent 1/k equivalent का स्क्वायर is equal to delta k1 by k1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा k2 by k2 का स्क्वायर. देखो यहाँ पे अगर माइनस भी आता तो भी आप डेल्टा के इक्विवेलेंट निकालने के लिए चीजों को ऐड ही करते, जैसा कि मैंने मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला के केस में बताया था, अगर आप लोग को याद हो. 1/v माइनस 1/u के केस में यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है. डन है. सो स्टिल यू हैव टू ऐड इट, बिकॉज मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि एरर, जो भी नेट एरर आप निकाल रहे हो वो आप मैक्सिमम लेते हो, ठीक है? सो वो हमेशा ही प्लस ही करना है. ये वाला फॉर्मेट जो है, दिस इज हेल्पफुल इन मिरर इक्वेशंस आल्सो, जैसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अगर आपको v एंड u गिवन है, फोकल लेंथ में एरर निकालना है और एनीथिंग लाइक दैट, यू विल बी यूजिंग द सेम थिंग, डूइंग द सेम थिंग एंड गेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, सिमिलरली 1/v माइनस 1/u के लिए भी सेम थिंग. यहाँ पे माइनस है बट स्टिल यू हैव टू कीप द प्लस एज आई सेड. So these are the thing. Similarly, 1/r1 plus 1/r2. I mean, when you are adding resistances in parallel, in that case also you can use this thing. So ये काफी हेल्पफुल है. अब यहाँ पे अगर मैं यूज करके बताऊं तो देखो, डेल्टा k1 हमें पता है 0.1, डेल्टा k2 हमें पता है 0.1. ओके, k1 k2 का वैल्यू पता है, यू सिंपली पुट इट हियर. अगर आपको डेल्टा k इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना था, तो एक के इक्विवेलेंट आप रिटेन कर लो, इनटू आप लिखोगे के इक्विवेलेंट डेल्टा k1 बाई k1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा k2 बाई k2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखोगे. डन है. नाउ डेल्टा k1 इज व्हाट, 0.1. के इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो इन दोनों को अगर आप सॉरी, हाँ, अगर इन दोनों को आप पैरेलल, सॉरी, सीरीज में ऐड करते हो
पैरेलल की तरह ऐड करोगे, 2 into 4 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 6. सो दिस विल बिकम हाउ मच, 4/3. यहाँ पे के इक्विवेलेंट की जगह क्या रखने वाले हो, 4/3. एंड दिस विल बिकम हाउ मच, 0.1 को आप कॉमन ले लो, देन 1/k1 का स्क्वायर. k1 कितना है तुम्हारा, दिस इज 2, राइट. 1 is 2, अनदर इज 4. तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 + 1/16. This is, so this is this thing. Into 100 करोगे, you will be getting what? Percentage error. So this is how you have to deal with things. Now let us move. ये एक ऐसा क्वेश्चन था, चलो इसको भी देखते हैं. क्वेश्चन इजी है, कुछ भी है नहीं यहाँ पे. A uniform rod of mass m and length L is suspended horizontally by two ideal strings attached to its two ends. दोनों एंड पे अटैच्ड है ये स्ट्रिंग, ठीक है. ये मार्क करना बहुत जरूरी है कि एंड्स पे अटैच्ड है. द सिस्टम इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम में है. इसका सिंपल मतलब ये है तुम्हारा कि यहाँ पे जैसे लेट अस डू दिस थिंग, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ले लो, दिस इज mg. और यहाँ पे देखो ये टेंशन और इसमें टेंशन दोनों में सेम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है. एंड इन दैट केस अगर इस टेंशन का मैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल भी. सो यू विल बी राइटिंग 2t इज इक्वल टू mg, है ना. और ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के अराउंड टॉर्क निकाल लो. सो इस टी का टॉर्क, टी दिस डिस्टेंस लेट्स से a, so ta in clockwise direction, okay, and then this will be ta in anti-clockwise direction. It should be a, then only these two torques will be equal and opposite they are already. Equal होने के लिए a सेम होना चाहिए. एंड टेंशन इस केस में क्या हो जाता है तुम्हारा, आई मीन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तुम्हारा ये, आई मीन यू कैन से हियर व्हाट इज दैट टर्म, या सिमेट्रिकली हैंग. सिमेट्रिकली हैंग कहने का मतलब कि दोनों ही स्ट्रिंग का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से सेम है. अगर सेम है, जैसे यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सपोज कर लो T1 है, तो T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2, और A1 इज इक्वल टू A2 है, सिमेट्रिकली हैंग है, राइट. तो इफ A1 इज इक्वल टू A2, यू विल बी सेइंग हियर T1 इज इक्वल टू T2. व्हाई? बिकॉज यू विल क्लियरली से दैट T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2. और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, इसलिए T1 एंड T2 हैज टू बी सेम. इसलिए मैंने टेंशन सिमिलरली सेम ले लिया. समझ रहे हो? सो दिस इज दिस थिंग. नाउ यू कैन से हियर, क्या कह सकते हो आप कि टेंशन दोनों ही स्ट्रिंग में सेम है. Now what is happening? Suddenly the right string is cut. Find the tension in the left string. So right string इसको आपने कट कर दिया. जब आप इसको कट करोगे क्या होगा? It will fall down. Done है? And it will fall down around which point? I mean कौन सा वो point है जो fix रहेगा? This one. क्योंकि this is still attached to this string. And this is not a spring कि वो नीचे की तरफ extend होगा या compress होगा. Nothing of that sort, right? So this is inextensible. Done it? So this point is going to stay here. So we can say that this rod will rotate around this point. Okay, around this point I am telling. Let us call it point P. So when you are cutting it, it will rotate around point P. Let us draw it here. Okay. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो. This is like this. Okay, अभी तो हमने कट कर दिया, इसको हटा दिया. Done it? जैसे इसको हटाओगे ये नीचे की तरफ जाएगा इस पॉइंट के अराउंड. Okay. Now let us talk about what will happen. जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इज कमिंग डाउन, दिस इज सेंटर ऑफ मास, इट विल कम डाउन. जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आप मार्क कर लो. अगर मैं ये पोजीशन मार्क करूं, सेंटर ऑफ मास इतने डिस्टेंस से नीचे आया है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है. नाउ व्हाट इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन? सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? टेंशन T ऊपर की तरफ है एंड नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है देख लो, दिस इज mg. So you will say an acceleration is in downward direction. So you will say here mg minus t is equal to, this is your ma. And also it is rotating, right? So torque आप निकालने की कोशिश करो इस पॉइंट के अराउंड. So इस पॉइंट के अराउंड t का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा. mg का टॉर्क will be mg L/2. So this is your mg L/2 and net torque will be equal to I alpha. Okay. And what is the value of I? I mean, what will be the moment of inertia around this point? That will be equal to ml square by 3. Okay. So this is this into alpha. So let us cut it like this. One L will get cut. And what we are left with? We are left with 3g by 2L is equal to alpha. Now, will there be relation between alpha and A? Yes.
I mean, this is, you can say this is in pure rotation around this point, right? So its angular acceleration is how much? Alpha. So we can calculate linear acceleration of any point, done it, depending on what is its distance from the axis of rotation point. So acceleration of center of mass will be how much? I mean, its distance from center of rotation is L by 2. So A ka value should be equal to alpha L by 2. So this should be equal to alpha is 3g by 12 into L by 2. So this is, sorry, 2 to cancel nahi ho raha. L cancel ho raha, 3g by 4. Okay. So this is 3g by 4. Now let us put it in equation 1. Okay. So equation 1 में आप put कर दो mg minus t is equal to, हमें निकालना क्या था देखो, मैं डिविएट कर रही हूँ, फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग. सो टेंशन निकालना है. अब मैंने यहाँ पे टी दिखाया, इसका मतलब ये नहीं वो प्रीवियस वाला टी है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके. सो एम जी माइनस टी, क्योंकि अगर प्रीवियस वाला टी होता निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एम जी बाई टू ही बोल देते. डन है. सो या, जस्ट दिस इज जस्ट अ वेरिएबल इन ऑर्डर टू इंडिकेट द टेंशन. ओके. So yeah, I needed to make it clear before, but मैंने डिस्कस नहीं किया. I'm sorry. एम जी माइनस टी को आप क्या लिखोगे? m इंटू ए, दैट इज 3g/4. अब आप टेंशन देख लो कितना होगा. सो 4mg माइनस 3mg, दैट इज mg. सो दिस इज योर mg/4. So correct answer should be which one? It should be mg/4. तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे पीवाई क्यू अगर आपने किया होगा ना लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स, तो सारे ही क्वेश्चन आप कर पाते बहुत ही इजीली. बहुत ज्यादा रिपीटेड है, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन आप इजीली कर पाते. ठीक है. तो देखो पीवाई क्यू प्रैक्टिस को हमें सीरियसली लेना चाहिए. बट या देन ओनली विल बी हेल्पफुल. पीवाईक्यू करना भी हेल्पफुल तभी होता है जब आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा बैकग्राउंड हो. ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और 10 इयर्स का पीवाईक्यू लगा लिया और आपका क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं, एक बैकग्राउंड वर्क का बैकग्राउंड होना चाहिए, देन ओनली दैट हेल्प्स. ओके. सो प्रैक्टिस करते रहना कंटिन्यूअसली टू स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फाइनली गेट इट मटीरियलाइज्ड इनटू मार्क्स. डन है. सो लास्ट स्टेज में आप जो भी अटेम्प्ट लेते हो वो हेल्पफुल तभी होता है जब आप बहुत दिन से चीजें अच्छे से करते आ रहे हैं. Now let us focus on this one. Parallel plate capacitor of capacitance C has vacuum between its plates. A dielectric slab of dielectric K and thickness D by 3 is inserted between plates. Find the new capacitance. तो जब इसमें वैक्यूम है तो इसका कैपेसिटेंस सी है. लेट अस से दिस इज डी एंड इट्स एरिया इज ए. तो सी इज इक्वल टू हाउ मच? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट वाई? बिकॉज वैक्यूम. ठीक है. तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगा. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग डायलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस डी बाई 3. अब आप क्वेश्चन में ये सोच के कंफ्यूज हो सकते हो कि ये वो डी बाई 3 कैसे रखा हुआ है. इससे ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे टच करके, या फिर वो आई मीन ऐसे रखा हुआ है डी बाई 3, या फिर इधर की तरफ शिफ्ट होके रखा हुआ है. बट कहीं भी रखा हुआ हो उससे मतलब नहीं होता. अगर आपने कैपेसिटर का, ये एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, हर जगह दिख जाएगा आपको. सो डायलेक्ट्रिक का थिकनेस मैटर करेगा, नॉट द प्लेसमेंट. In each placement you are going to get the same value of capacitance, I would say. So जो EG placement लगता है वो रख के देख लो and calculate it. So I'm going with the first diagram. क्योंकि आप सेकंड के साथ भी जाओगे तो you're getting 3 capacitors. One this one, another this one, and third one this one. लेकिन इसके पास भी वैक्यूम है, इसके पास भी वैक्यूम है. So इन दोनों को एक साथ क्लब करने में ही फायदा है. So that is what I've done here. Okay. सॉर्टेड. सो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिया कि प्लेसमेंट कहीं भी हो, सी इज गोइंग टू कम द सेम. ओके, आप करके देख सकते हो. सो दिस इज दिस थिंग. अब आप देख लो यहाँ पे वी आर गेटिंग 2 कैपेसिटर्स नाउ. one capacitor is what? Having dielectric of the value K, and another one is still vacuum. So this is D by 3. This will become 2D by 3 because total is D. So this is K and this is still epsilon. I mean epsilon not, I mean K is what? Relative permittivity. Then K is what? Relative permittivity. And that is still here 1. So overall it is epsilon naught. Okay. So yeah, this is this thing. अब देखो ये दोनों किस में है. अगर आप इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, C1 and C2 are in what? Series. You can say they are end to end connected. Done it. So it is at V1 potential. Let's say this imaginary plate is at V2. This is at V3. You can clearly see that potential difference between two capacitors is not same. They're not in parallel, they are in series. Okay. C1 का वैल्यू आप क्या लिखोगे? K epsilon naught, K epsilon R, डन है. epsilon naught A divided by D by 3, डन है.
and C2 is going to be how much? Epsilon naught here, A, and this is 2D by 3. So this is this thing. अब देखो आप C नॉट के टर्म में इसको क्या लिख सकते हो? K 3 epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D is C. So this is nothing but 3 Kc. And C2 is equal to how much? 3 by 2 C. Sorry, Kc मैंने कुछ subscript जैसा लिख दिया है. This is this one. Now they're in series. So you will add them like in what? Parallel. Then these are capacitors. So 1 by C equivalent will become how much? 1 by 3 Kc plus uh, how much this is? 3 by 2C. Okay, so 3C by 2. Now this will become how much? You simply take 1 by 3C common, and if you do that, you will be getting how much? 1 plus 2K. Okay, so divided by K. So answer C equivalent is going to be how much? This is 3Kc divided by 2K plus 1. Let us check. So 2K plus 1 somewhere, can you spot? Okay. This is 3Kc by, okay. In the bottom, we have 2K plus 1. 3Kc by 2K plus 1. This is D. Okay. तो सॉर्टेड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. सो हमारे पास एक ओरिजिन जैसा सिचुएशन है, इट इज दिस वन, एंड यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज केप्ट है 10 टू द पावर -8 कूलम. Then there is another point charge of this value initially located at A. तो A point आप कहीं यहाँ पे मार्क कर लो. This is 2, 2, 1. The charge is moved from point A to point B. अब suppose कर लो point B तुम्हारा ये है, and this is 4, 4, 2. Okay, find the work done in the process. So work done क्या होगा? तो Q charge basically are moving from A to B. What is the work done? So work done per unit charge क्या होता है? अगर आपको एक famous सा equation पता हो, work done per unit charge is equal to potential difference. Okay, so we need to figure out what is potential difference at point A and what is potential difference at point B. So, I mean, you're moving charge Q. So you don't need to bother about what potential moving charge is creating. I mean, what potential is at point A because of the surrounding charge. That should be your consideration. ठीक है? क्योंकि अगर सिर्फ Q चार्ज होता और कुछ नहीं होता, उसको एक पॉइंट से दूसरे जगह ले जाना है, कोई वर्क नहीं करना तुम्हें. डन है, क्योंकि उसको कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर सराउंडिंग में कोई चार्ज है, वो उसके मोशन को अफेक्ट करेगा. तो सराउंडिंग चार्ज इज हियर एट पॉइंट ए. व्हाट विल बी द पोटेंशियल? तो पोटेंशियल, आई मीन बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? के क्यू बाई आर वन. ठीक है. हाउ यू विल कैलकुलेट दिस आर वन? आर वन निकालना बहुत इजी है. आई मीन दिस इज योर 2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो. So this is basically 2 का square plus 2 का square plus 1 का square, vector thing, right? So this is 3 unit. Similarly, here it will become how much? K, kq by r1. K is 1 upon 4 pi epsilon naught, 10 to the power 9 basically. So 10 to the power 9 into 2 microcoulomb it is, right? Sorry, no, 10 to the power -8 coulomb. Because of that, you will be the potential. So this is this divided by r1, that is 3. Then so this is your 10 by 3 volt. Okay, now what will be V2? आप V2 चेक कर लो यहाँ पे. तो V2 will be equal to I mean KQ by R2. Okay, and what will be R2? 4 minus 0, जैसे ये डिस्टेंस आप निकालोगे. डन है. तो 4 minus 0, 4 minus 0, बिकॉज 0 क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये 0.00 है जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, एंड 2 minus 0. So this is 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. So this is your 32 plus 4, that is 36, and that is your 6. So this is nothing but k is 10 to the power 9. This is 10 to the power -8, and this is 6. So this is 10 by 6. Now you're moving from where to where? You're moving from high potential to low potential. है ना? This is greater and this is smaller. ओके, तो यू आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इस केस में क्या होता है? जैसे ग्रेट हाइट से स्मॉलर हाइट तक जब कोई भी चीज ग्रेविटी में फॉल करता है, तो उसके लिए वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एनर्जी को गेन करता है. यानी कि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का क्या होता है तुम्हारा? दैट इज योर नेगेटिव, यू कैन से. सो हियर ऑल्सो इफ यू विल सी हियर, आई मीन वर्क डन को आप क्या लिखोगे? क्यू डेल्टा वी. ओके, क्यू इज हाउ मच विच चार्ज यूर मूविंग. 2 into 10 to the power -6. Delta V is what? V2 minus V1. That is 10 by 6 minus 10 by 3. So that has to be negative because you're moving from
higher potential to lower potential. Okay, so you can calculate, you can get the answer. This is this. Now this question is very easy. ऐसे questions हमने बहुत किए इस channel पे. In double slit experiment, the distance between slit is given. Screen is placed at this distance. क्योंकि मैंने YDAC setup को तुम्हारे लिए इतना easy किया था. I have solved so many questions. और अगर तुमने उस सेशन को देखा होगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी फील हुआ होगा. व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा स्लिट है, सॉरी सीट है. द सेंट्रल फ्रेम शिफ्ट बाय दिस, फाइंड द डिस्टेंस टी ऑफ द सीट. ओके, सो मैंने तुम्हें बताया था बिकॉज ऑफ दिस वन इन द पाथ ऑफ लाइट, part difference will change by what amount? Mu minus 1 into t. This is delta x. I mean, अगर ये सेट नहीं होता तो यहाँ पे part difference 0 होता है. Because of this, I mean, this is going to travel more distance. How much more? This much more. So this is the extra path length that is coming because of placement of the seat. And because of that, this is the part difference. डन है. और इस पार्ट डिफरेंस की वजह से फ्रिंजेस शिफ्ट करेंगे. सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं होने वाला है. डन है. सेंट्रल मैक्सिमा विल बी समवेयर दिस साइड. ओके, so that is going to shift. I mean fringes are shifting. अब fringes are shifting और यहाँ पे बोला है that central fringe shift by this. So let's say central fringe यहाँ पे आ गया. डन है. अब इसको आप कैसे लिखोगे? I mean how you will put it? I mean if I say this is y, then how you will put it in the equation? तो इक्वेशन में आप कैसे पुट कर सकते हो? जैसे अगर मैं बोलूं कि ये डेल्टा एक्स की वजह से एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट कर रहे हैं, देन आई विल से दिस इज एन लैम्डा. और डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या होता है? पार्ट डिफरेंस है. अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाओ देन दिस इज डी साइन थीटा. ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस इज स्मॉल डी 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर. दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा है. सो यू कैन से एल इज और कैपिटल डी इज फार ग्रेटर देन स्मॉल डी. डन है. वी कैन से दिस. एंड इफ यस देन साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, है ना. और अगर आपने इसको tan थीटा लिखा, साइन थीटा को, आई मीन tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? मैंने बताया भी था दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट YDAC सेटअप and if you're taking the approximation, then at any point if you're talking about the fringe and if that point is getting obtained at an angle theta, then this is y, this is d, and y by d is equal to tan theta. So I prefer not, while explanation, I prefer not going by direct formula. I love explaining things. So इसलिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ. So y को आप क्या लिख सकते हो? I mean tan थीटा को क्या लिख सकते हो? Y by d. This is sigma. ओके, तो डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो? डी tan थीटा. डी tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? Y by d. सो y को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया. डन है. अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया. सिंपल. y इज गिवन, स्मॉल d इज गिवन, कैपिटल D इज गिवन, mu 1, everything is given. t you calculate, right? So simply put the formula, get the answer now. So mu minus 1 is half, this is t, and this is 0.1, this is 50, and this is y, this is 0.2 into 10 to the power minus 2. क्योंकि ये सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट? So yeah, that is sorted. Now let us move ahead. Find the moment of inertia of given body about the given axis. So moment of inertia इस point के अराउंड क्या होगा? यहाँ पे ये क्रॉस है. डन है. So this is a line which is perpendicular to the plane of figure passing through this point. So moment of inertia of this rod 1 will be equal to how much? For this rod, it is one end point. Okay, so this will be ml square by 3. एंड फिर दिस रॉड इट इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन, आई मीन यू कैन first calculate moment of inertia around line which is parallel to this line but passing through its center of mass. So that will be equal to ml square by 12 and then plus mass into I mean distance of its center of mass from the axis of rotation. uh, Sorry, that is your L. Okay, so this is your L ka square. Okay, this is sorted, right? So this is this one. So this is for the first rod. So call it I1 and call it I2. Add it, you'll be getting the answer. Okay, so this is this thing. Let us move ahead. Temperature of 10 mole of an ideal gas whose molar specific heat at constant pressure is this much, and its temperature is increased by this. Find the increase in internal energy.
तो देखो, तो मैंने ये टॉपिक डील नहीं किया है आई वुड से, बट या वन थिंग इज हियर, जब भी आप इंटरनल एनर्जी निकालते हो, इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रोसेस। उसका एक कॉमन सा फॉर्मूला है, क्योंकि दिस इज अ स्टेट फंक्शन। एंड डेल्टा यू को आप हमेशा लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी। Okay, and you know that Cp minus Cv is what? This is R. So if Cp is 7R and Cv, if we have to calculate, Cv will be 6R. So simply put the value, you will be getting the answer. This is 10. Okay, Cv is 6 into R is 25 by 3. Temperature difference is 10. Put the answer, you will get the put the things, you will get the answer in Joule. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, टेम्परेचर को यहाँ पे हमेशा केल्विन में पुट करना होता है, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे आर का यूनिट में केल्विन के टर्म में, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है, देन यू आर गुड टू गो विथ एनीथिंग. Now let us look at this question. The objective lens has a focal length this, and the eyepiece has focal length this. We are talking about compound microscope. Tube length of microscope is this. Find the magnification produced by this microscope for normal adjustment. So normal adjustment कहने का मतलब when final image is getting formed at infinity. Okay. So compound microscope will look something like this. Okay. And I have always told you, if you have to talk about its magnification, M को आप क्या लिखोगे? M1 into M2. Or you can say this is MO and ME, eyepiece. Eyepiece always acts like a simple microscope. So अगर final image infinity पे बनता है, ये होगा तुम्हारा D by FE. Okay. And M नॉट के लिए V by U लिख सकते हो. अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव से, यू कैलकुलेट V एंड पुट इट एंड गेट द आंसर. लेकिन अगर आपका ट्यूब लेंथ की बात हो रही है, देन दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी L by F नॉट. Two formulas. I mean, this is common formula, right? And this is one special case that you need to remember. L by F naught into D by Fe. I mean, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा F नॉट बुला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इमेज जो हमें ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाना है उसको बड़ा होना चाहिए, सो दैट दैट कैन गेट इजिली सीन बाय द आईपीस. और इमेज बड़ा हो के लिए जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस के आसपास रखते हो, ठीक है? सो दिस इज F नॉट. And by some adjustment, you will be seeing that image distance is what? This is L. Let us not go in there, because in the theory part, we have already discussed. So L by F naught into D by Fe. L का value आप put कर लो 32. By F naught is how much? That is 20. And this is D, this is least distance of distinct region, 25, divided by Fe. That will be equal to how much? 4. Okay. So this will become this, and this is this, this is this, and this is 10. Okay. So final magnification will be positive or negative. It has to be negative. Why? Because initially तुम्हारा ये ऐसा है, finally image जो बन रहा है, ये बना रहा है, ये कुछ ऐसा inverted है. Okay. So yeah, negative होना चाहिए. Done it? Because you can clearly see here, objective will form inverted image, and of this inverted image, eyepiece will form the virtual image. Done it? So, one is making it inverted, another is keeping it as it is. When you talk about the alignment with respect to principal axis, done it? So एक के लिए magnification negative है, दूसरे के लिए positive है, M1 into M2 negative होगा. So -10. Okay. So this will be your answer. Now let us talk about this one. Conducting circular loop of area A is placed with its plane perpendicular to a magnetic field, which varies with time this. So its plane is perpendicular to magnetic field. कहने का मतलब इस एरिया का जो नॉर्मल होगा, that will be parallel to magnetic field. This is what sense we are getting initially, right? With its plane perpendicular to a magnetic field. Okay, initially like this. Magnetic field is varying, and this is varying with time like this one. The resistance of loop is this. Find the average thermal energy dissipated in the loop in one period of magnetic field. Okay. So magnetic field, if you see carefully here, magnitude wise it is changing. Okay. And this coil is not rotating. Magnetic field is magnitude wise changing. Why there will be thermal energy getting dissipated in the loop? Only if there is current flowing in the loop. और loop में current क्यों flow करेगा? There should be some potential difference. Potential difference कहाँ से आएगा? If flux is changing. तो सबसे पहले आप flux लिख लो. Flux क्या होता है? B dot A. Done it? And N is parallel to B. And it will stay parallel because this coil is not moving, right? And magnetic field, magnitude is changing, its direction is staying same. It is perpendicular to, it is in such a way that plane of this coil is perpendicular to magnetic field. So this is going to be BA. Now B का value आप put कर लो, sin 100t, and A is how much? 1.
So flux is this one. What will be EMF? That is minus d phi by dt. So that is going to be equal to magnitude wise, if I calculate d sine 100t dt. So this is going to be 100 cos omega t magnitude wise. Okay, negative sign has to do with the Lenger's law. So this is this. Now what will be the peak EMF? You can say peak EMF will be 100 volt. So what can be the, but we don't have to talk about peak EMF or something. We have to talk about average thermal energy dissipated in loop in one period of time. So chalo, as a function of time, let us talk about how much energy is getting dissipated. So that is heat you have to calculate. So I square RT. I कैसे निकालोगे आप? EMF by resistance. Okay. So this का square into RT. So you can clearly see here. This is E square and then this is R, and then in dt time let us calculate. So then in dt time this is this much. E का square कर लो आप. E का square अगर आप करते हो 100 का square, that is 10 to the power 4 cos square omega t, and this is R is 100 I guess, right? So R is 100, yeah. R is 100 into dt. This is the small amount of heat getting dissipated in a small amount of time dt. Now we have to calculate average of this. So average आप कैसे निकालते हो? 0 से t, I mean, if you will do this divided by dt, 0 से t. This is how you do it. So this will become, इसको करने की जरूरत नहीं है. Simply, I'm just putting the formula. So this is 100 को मैंने common ले लिया. Cos square omega t dt, 0 से t divided by dt, 0 से t. आपको पता है इसका वैल्यू हाफ होता है ना? So this is 100 by 2. This is your 50 जूल. ओके, सो मैंने ये हाफ इसलिए बोला क्योंकि आपने बहुत बार किया होगा. आई मीन एसी टॉपिक में भी किया होगा बहुत बार. सो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इन वन टाइम पीरियड इज हाफ. साइन स्क्वायर का भी एवरेज इन वन टाइम पीरियड इज हाफ. कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, इसका हाफ होता है ना. सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. नाउ लेट अस गो विद दिस वन. और ये क्वेश्चन हमने आई मीन आपने बहुत बार इनकाउंटर किया होगा. So again, there is no point of solving it, I would say. In an electrical circuit, a battery of electromotive force E, I mean EMF it is talking about, an internal resistance R is connected to external load R. And this, ये एम्स में भी आया है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, ये बहुत बार बहुत जगह आया है. So this is this. ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है. तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने के लिए व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू. सो इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. और ये कहाँ से आ रहा है? देखो, आप क्या करोगे, इसमें करंट निकालोगे, ई बाई आर प्लस आर करोगे. ठीक है. पावर को क्या लिखते हो आप? आई स्क्वायर आर लिखते हो. पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस यू विल बी राइटिंग आई स्क्वायर आर. सो दैट इज ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर. Now, keeping R as a variable, you have to maximize this power. Done it? Because you have to talk about R ka value for which power will be maximum. So maximum of this function you need to calculate. dp by dr को आप क्या करोगे? 0. So when you will apply all those things, you will be getting R is equal to R. ठीक है. So ये इतना कॉमन है कि I hope अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आपके दिमाग में ये ऑलरेडी होगा. Now let us talk about this one. Refractive index of a prism is this. Find the angle of incidence of a light ray such that emerging ray just grazes the surface of prism. So grazes the surface of prism कहने का मतलब ऐसे जाए. Emergent ray, okay? ये कुछ पैरेलल जैसा दिख रहा है बट ऐसा होगा नहीं. ऐसा ड्रॉ हो गया है. So ठीक है, चलो मैं हटा ही देती हूँ इसको. Sorry, this is this, okay? तो या दिस इज दिस वन. यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाओगे? नॉर्मल बनाओगे. यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे. ठीक है. If it is grazing, what you can see, this angle of incidence should be critical angle for this media. Okay, so for this media combination √2 and 1, this should be critical angle. क्योंकि critical angle के लिए ही जो light incident होता है, that graze the surface. डन है. सो यहाँ पे आप क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करो. साइन आईसी तुम्हारा क्या होगा? 1 by म्यू. I mean, you write it like mu rarer by mu denser. Mu rarer is 1, so 1 by mu मैंने लिखा, and this is 1 by √2. So IC is equal to 45. ये हो गया तुम्हारा 45. और ये अगर 45 है, आपको भी पता है R1 plus R2 क्या होता है? 90. Sorry, this is A. And here A is 90. Okay, so this is 90. R1, one is 45, another also has to be 45.
सो हमें R2 पता है ना, दिस इज R2 पता है, सो R1 विल बिकम ऑल्सो 45, सो दिस इज 45। अगर मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, यूज द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। सो व्हाट यू विल बी राइटिंग, साइन आई into 1 is equal to root 2 sine r, that is sine 45. So sine I will become 1, I is equal to 90. It is this one, okay? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। A block of mass image at rest with respect to a hollow cylinder rotating with a constant angular speed omega. So it is rotating with constant angular speed omega. Radius r है. Find the minimum coefficient of friction between block and the cylinder so that block does not slip. This is block of mass m kept like this. अगर ये स्लिप नहीं करता है, जैसे देखो इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, इस सरफेस पे नीचे, क्यों, mg फोर्स लगने की वजह से, ओके। सो फ्रिक्शन मस्ट ऑपरेट अपवर्ड, and we know that friction will be less than equal to mu n, okay. So in order for it not to slip, F is equal to mg. So you will write here F should be equal to mg, so mg will be less than equal to mu n. Now what will be the value of n? So ये जो चीज है तुम्हारा, that is kept in a non-inertial frame, or you can say since it is kept on the wall of cylinder which is rotating with omega, this is also rotating with omega. So towards the center there must be something which is applied required centripetal force, and that can be normal getting applied by the wall, okay. So this n must be equal to m omega square r, otherwise it won't be able to stay here, it won't be able to go around in this circle of radius r with angular velocity omega, okay. So this is this thing, n is equal to m omega square r. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, mg less than equal to m omega square r, m will get cancelled, okay, and this is mu n, right? So mu will be here. Now if you see, we have to calculate what minimum coefficient friction thing. So mu omega square r is greater than equal to g, and mu is greater than equal to g by omega square r. तो mu का minimum value क्या होगा? Mu minimum you will be writing as g by omega square r. So this is going to be your answer. Okay. Sorted. Keeping the rule of significant figure in view, find the sum of following physical quantity. जब आप physical quantity को add करते हो तो final answer में least precise आंसर लिखना होगा। I mean इसमें least precise कौन है? I mean किसका precision कम है, यानी कि डेसिमल के बाद किसमें पॉइंट्स कम है। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। सो 1 इज द लिस्ट, सो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस हो। वही जब आप डिवीजन करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, कीप इन माइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आप फाइनल आंसर में लेते हो। यहाँ पे लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू से तुम्हारा आंसर गाइड होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। Now let us add it 50.01, and then this is 153.2, and then this is 0.123. So this is 333, this is 302, and decimal के बाद 1 place retain करना है, round off करोगे 33 है, smaller than 5 है, so 203.3. Simply we have to drop this two, okay. So correct answer should be this one, okay. So questions were actually very simple. For an ideal gas, let the ratio of specific heats be this. During an isobaric expansion, gas does 100 joule of work. Find the amount of heat supply. अब ये क्वेश्चन तुम तभी कर पाते जब आपने डेरिवेशन सारी चीजों का सही से किया। जैसे आप ध्यान से देखो, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी, एंड दैट इज इक्वल टू 100 जूल गिवन। वर्क डन को और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको याद हो। So PV is equal to nRT. This is applicable to all sort of processes because this is ideal gas equation. To the long gas is ideal, you can write this equation no matter what the process you are dealing with. Isobaric, isochoric, isothermal, polytropic, anything. Okay. So अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों साइड लेते हो, P को कांस्टेंट लिया पहले डेल्टा V को कांस्टेंट लिया डेल्टा P, एंड दिस इज इक्वल टू NR डेल्टा T. तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये टर्म तो तुम्हारा जीरो हुआ, और पी डेल्टा वी तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज योर एनआर डेल्टा। ये आपने तब भी किया होगा जब आप सीपी माइनस सीवी को आर की तरफ कैलकुलेट कर रहे होंगे, ओके। सो या डेरिवेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, पी डेल्टा वी इज एनआर डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगी, एनआर डेल्टा टी,
and this is your 100. ओके, अब जब मुझे ये पता है, आई कैन इजिली टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड क्या होगा, देखो तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड को आप क्या लिखोगे, एनसीपी डेल्टा टी, right? And here gamma is 1.4. It means CP by CV is 1.4. It means CV is CP is what? This is your 7 by 2R, and CV is how much? This is 5 by 2R. It is talking about diatomic thing. Okay. So this is this. So CP is equal to 7 by 2R. Put the thing here. N into 7 by 2R delta T. So this is nothing but 7 by 2 NR delta T. And NR delta T तुम्हारा देखो कितना था, 100 था. ठीक है. तो यहाँ पे आप 100 रख दो. So this is 50 and this is your 350 joule. So that is going to be your what? Answer. So now let us look at this one. The width of river is 200 meter and the river is flowing with a uniform velocity of this much. A boat can move with a speed of this in still water. If the boat wants to cross the river in minimum time, find the displacement along the river bank during the cross. So this is the river and river water की velocity कितनी है, 10 meter per second. एंड पर्सन की स्पीड, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर. कहने का मतलब जब भी आप स्टिल वाटर में वेलोसिटी की बात करते हो और बोट ऑफ पर्सन, देन यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन और बोट इन इट्स पर्सनल कैपेसिटी. तो उसकी कैपेसिटी कितने वेलोसिटी से स्टार्ट करने की है, चलने की है. ओके, सो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो इफ द बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए देखो, रिवर को क्रॉस करने का मतलब ये डिस्टेंस को क्रॉस करना है, डन है. और रिवर वाटर की जो वेलोसिटी है वो कहीं से भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इन ऑर्डर टू मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन है. डन है. सो अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, देन इस बोट को अपनी सारी वेलोसिटी इधर की तरफ लगानी पड़ेगी. तो द बोट नीड्स टू स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन, नीड्स टू स्विम इन दिस डायरेक्शन. ओके, so with 20 meter per second, it will start in this direction. Okay, but because of river water, its velocity will change. Its velocity will be velocity in its personal capacity plus velocity of river, right? So somewhat it will move in this direction. क्योंकि इसकी velocity sum of these two हो जाएगी. Because this river water will also propel it forward in this direction. And because of its own velocity, it will go in this direction. Done it? But since it wants to cross in minimum time, मैंने इसकी velocity का direction along the width दिया है. So how much time it will take? Is this width is given 200 meter. Yeah. So time taken to cross 200 by 20. So that is your 10 seconds. So in 10 seconds it will cross. And by that time, how much horizontally it has moved? So find the displacement along the river bank. So along the river bank, it has got displaced. Why? Because river water is propelling it with velocity this much. So distance by which it will get shifted is velocity in horizontal direction, time taken, and that is your 100 meter. Okay, so this is going to be your answer. Okay, so this is sorted. Now let us move ahead. The terminal velocity of a spherical ball of radius this is falling through a liquid is this. Find the terminal velocity of a spherical ball of 3 millimeter falling through the same liquid. Again, putting the formula, getting the answer. Terminal velocity का formula क्या होता है? 2r square rho minus rho naught g divided by 9n. Okay. So v1 by v2, I mean everything is staying constant except that of radius. So v1 by v2 will be equal to what? This will be equal to r1 by r2. Done. So you simply put the value. What is this v1? That is 20. And what is r1? That is 6. And then this is v2, and this is becoming how much? 3. Okay. Okay, this is r ka square. So 6 into 6, and this is 3 into 3. Okay. So if you solve this, you will be getting how much? 5. So v2 is equal to 5 meter per second. Putting the formula, getting the answer type thing. Okay. Now, a particle executing simple harmonic motion, maximum kinetic energy given है and angular frequency given है. Find the frequency of simple harmonic oscillator. Okay. तो फ्रीक्वेंसी निकालना था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है. इफ दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन. ओके, सो फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखते हो? फ्रीक्वेंसी आई मीन 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा. सो एफ इज इक्वल टू योर ओमेगा बाई 2 पाई. ठीक है, एंड दिस ओमेगा इज हाउ मच? दिस इज 176 and 2 pi. Okay, so 2 into this will become how much? This is okay, 22 by 7 रख लो आप. So this will become how much? 8 times में cancel हो जाएगा
and then you are left with what? This is your 28. So 28 you are going to get as answer. ठीक है? So simply putting the thing and getting the answer type question. Which logic gate is represented by the given figure? So given figure में कौन सा logic gate है? Just give me some time. I will be resuming. Okay. We just need to identify the logic gate here. Do one thing. जैसे I just go with the input. Okay. So A and B and finally C I will be putting. So input हम कैसे ले सकते हैं? 0 0. अब देखो अगर आप 0 0 लेते हो आपको क्या मिलने वाला है? So 0 0 का नॉट क्या हो जाएगा? 1 1. Okay. And 1 1 का और क्या होता है? 1. And this is NOR. Okay. This gate is NOR, right? So that will become how much? 0. And 0 का नॉट फिर से क्या हो जाएगा? 1. So this is 1 you are going to get. Now put here 0 and put here 1. So 0 का नॉट क्या हो जाएगा? 1. 1 का नॉट क्या होगा? 0. 1 0 का और क्या होता है? 1. But this is not, that will be 0. And 0 का नॉट क्या होगा तुम्हारा? 1. So if you are putting 0 1, this is again 1. And sorry, we got 1, right? 0, this is 1. Okay, 1 0 0 1 is 1 and then 0 0, yeah, 1. So 1 0 भी तुम्हें क्या मिलने वाला है? 1. And what will be 1 1 if you take? So high input अगर आप लेते हो उसका नॉट 0 0 होगा and 0 0 का और क्या होता है? 0. And this is not, so that will become 1 and that will become 0. So this looks like what? I mean, this looks like NAND gate, right? Because 0 0 का AND क्या होता है? 0. उसका not क्या हो जाएगा? 1. Similarly, you can see here. So this is nothing but the NAND gate. Let's see. So this is this thing. Okay. I mean, this method I explained because अगर आपको mathematics नहीं clear है, उसमें time लगता है थोड़ा. I mean, in order to know this, if you don't know, then. But ये काफी simple सी चीज है जिसको आप अगर आप gate जानते हो, then you can simply put the things, you can get the answer. Okay. Now let us go with this one. Two identical uniform rods, each of mass m and length L, are rigidly joined to form a T-shape. So T-shape structure is getting formed. As shown in the figure मेरे पास नहीं है. Find the moment of inertia of system about an axis passing through the lower edge of the T and parallel to the top horizontal. So axis तुम्हारा कैसा है? Axis कुछ ऐसा है, ऐसा. So इसके अराउंड तुम्हें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब देखो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का कितना होने वाला है? दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड and that will be equal to how much? ml square by 3. Okay. Even if this line is lying in the plane of this rod, then also it will be ml square by 3. And second rod के लिए क्या होगा? देखो second rod का जो हर मास है, that is at same distance from this axis and that distance is L. So that will be nothing but ml square. Okay. So you just need to use the basic concept of moment of inertia. Okay. So this thing will be 4 ml square by 3. This should be the answer actually. Okay, so this is this. Now let us go ahead. An electromagnetic wave having electric field, this. So हमारे पास electromagnetic wave था, electric field this and this. Sum of these two things. Each incident on a metal surface. Work function is given. Find the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. तो देखो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा प्यार से डील करना है. इस पे मेटल सरफेस पे जो लाइट फॉल कर रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ टू फील्ड्स, राइट? एक फील्ड को अगर आप ध्यान से देखो इसका ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा 1 लिख लो, 3 इंटू 10⁵. ओमेगा 2 कितना है तुम्हारा? 12 इंटू 10⁵. सो दिस इज ऑल्सो 15. ओके. एंड यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी 2 है. जैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हो? 2 पाई एफ. सो एफ इज ओमेगा बाई 2 पाई. सो F1 इज इक्वल टू that is 3 into 10⁵ by 2 pi, and this is your 12 into 10⁵ by 2 pi. अब देखो हायर फ्रीक्वेंसी दिस वन है और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वी विल बी डीलिंग विद दिस रे. ओके. एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होता है? दैट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग. सो HF माइनस वर्क फंक्शन. ओके. दिस कैन बी मैक्सिमम. सो HF तुम्हारा क्या होगा? H क्या होता है? दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो दैट इज 6.6 आई गेस इंटू 10⁻34 इंटू F, and that is equal to 12 into 10⁻15 divided by 2 into 3.14. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो then phi is given in electron volt. इसको अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो. 1.6 into 10⁻⁹.
ओके, सो दिस -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको ध्यान से देख लो, इसको जल्दी आप सॉल्व कर लो। जैसे इसको सपोज कर लो मैंने 2 से कट कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज 34 और 19 को अगर आप चेक करो, दिस विल बिकम -15, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। ओके, सो यू आर लेफ्ट विथ 120/16। ठीक है, सो दिस विल बिकम हाउ मच? दिस विल बिकम योर 15/2 sort of. So this is your 7.5 something. Okay, and 7.5 minus 2.8 अगर आप करते हो, then this will become how much? This will become, this is 2.8, this is 7. Okay, so this is 4.7 something. Okay, and if you see here, this is close to 5.4, right? So C should be the option. आपको यहाँ पे बस इस चीज को इंटरप्रेट करना है कि हमारे मेटल पे 2 फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल कर रहा है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हायर फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज ओनली कैलकुलेशन। ओके, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल सर्किट एबी। सो एबी में हीट प्रोड्यूस निकालना है, बहुत ही इजी है। आप अगर ध्यान से देखो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, एबी वाला पोर्सन है ना, 1:2, एंड दिस इज ऑल्सो 2:4, यानी कि 1:2। सो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। दिस इज 1 and 2 इन सीरीज 3 ohm, 2 and 4 इन सीरीज 6 ohm, and 3 ohm and 6 ohm in parallel, so 6 into 3/9, so this is going to be 2। so this AB के क्रॉस जो R equivalent है, that is how much? That is 2 ohm, and then this is 2, I mean then circuit will become like this is 2, and this is this, and this is your, this is 2, this is 2, this is 20. So R equivalent is 4. Current will be equal to 20/4, that is 5 ampere. Okay. What is the heat produced in external circuit in 1 second? That is power we are getting asked. Or okay, not power. In 1 second, yeah, that you can say. क्योंकि power को हम क्या लिख सकते हैं? Energy per unit time. So time को अगर आप 1 second लेते हो, then that is your what? You can say that is exactly equal to the power. क्योंकि पावर को अगर 1 second से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल सर्किट इन 1 second, सो दैट वे। तो लेट अस राइट इट, आई मीन दिस विल बी इक्वल टू I² RT। चलो मैं प्रॉपर ही लिखती हूँ। सो I² 25, R इज हाउ मच? AB का R कितना है तुम्हारे? इसके क्रॉस पावर पूछ रहा है ना, सो दिस इज 2, एंड देन टाइम इज 1, सो नियर अबाउट 50 जूल मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो कुछ ऐसा। ओके, done है। Now this is something you just need to draw and see. A current carrying solenoid is placed vertically. So solenoid vertically placed है, कुछ ऐसा। Done है। And particle of mass m and charge q is released from rest along the axis of solenoid. Axis of solenoid will be this one. Find the condition that the acceleration a of the particle will satisfy. So acceleration क्या होगा? आप देखो यहाँ से अगर चार्ज को आप रिलीज करते हो, then because of gravity it will gain velocity in the downward direction, and velocity is along the axis. Magnetic field is along the axis. Magnetic force q v cross v होता है। v और b parallel है, right? So if it is parallel, magnetic force is zero. Only gravitational force will act, and in that case, net force is equal to mg है. So mg will be equal to ma, a will be equal to z. You can say. Okay, so this is this thing. Now let us talk about this one. Electromagnetic wave propagates in a space with electric field given by this. Find the direction of magnetic field. EM wave से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। EM wave से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एंड यहाँ पे हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए था। प्रोपगेशन वेक्टर, दैट इज वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, गेट्स डिटरमिन बाय E क्रॉस B। ओके, और यहाँ पे अगर आप इक्वेशन इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जे कैप डायरेक्शन, सो दिस इज इन जे कैप डायरेक्शन, एंड ओमेगा टी माइनस के से हमें ये पता चल रहा है वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव एक्स ले रही हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ले रही हूँ, एंड यहाँ पे एक्स है इसलिए एक्स एक्सिस ले रही हूँ। ठीक है, सो प्रोपगेशन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किधर है? आई कैप। So J cross what will be I cap? That is what you have to figure out. So IJK. So J cross K is what? J cross K is I. Okay. So I will say here it should be K cap. Done it? Yeah. If it is like this, then it should be K cap. Done it? Okay. Now let us move with this one. A wave pulse travel along a string of length L. So this is a string, and this is of length L. Wave pulse is traveling. So this is the pulse. Okay, pulse we are talking about. So single one we draw.
ये पल्स है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड इट हैज अ टेंशन T and its linear mass density is mu1. Another string has same length and tension and its linear mass density is this, such that this ratio is this. Find the ratio of time taken for wave pulse to travel from one end to another. टाइम टेकन क्या होगा तुम्हारा? टाइम टेकन होगा लेंथ बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? टी बाई म्यू, ठीक है। सो टाइम टेकन की अगर आप बात करो T1/T2, देन दिस इज इक्वल टू V2/V1. So time taken inversely proportional to velocity, and velocity is what? Inversely proportional to what? Mu. Okay. So V2 will be equal to how much? This will become mu1/mu2. You can say. So this is nothing but 1/root. Okay. So something like that. Simply putting the formula, getting the answer. Okay. Now two rods of length this, each are joined end to end. So end to end joined है यहाँ पे, and alpha 1 given है, alpha 2 given है. Both rods are initially at same temperature, which is then increased to this. Find the final length. So final length, I mean, they are free to expand. So simply you need to see what will be change in first length and second length. So alpha L1 delta T, and then alpha 1 ले लो, alpha 2 L2 delta T. L1 L2 same है. Put the value, you will get the answer. Final length will be sum of these two, right? So yeah, a planet is revolving around Earth in a circular orbit of this radius and is transferred to a circular orbit of this. The net energy in doing so is this. Find the nearest integer. So इस क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, but I will make you understand this question. जैसे देखो, अर्थ के अराउंड एक प्लैनेट, इनिशियली वो R1 रेडियस में, ठीक है। जब वो R1 रेडियस में होगा, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, -Gm. M इज द मास ऑफ प्लैनेट, सॉरी, M इज द मास ऑफ this central thing around which it is orbiting. So it can be sun here, and but here the planet is revolving around Earth. So if this is Earth, then this is mass of Earth, okay, and this is mass of planet, and divided by what? Divided by this R1. This is total energy. अगर आप इसको हायर रेडियस में ले जाते हो, ठीक है, हायर रेडियस का मतलब क्या होगा? ये R1 इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करता है तो इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज घटेगा, बट सिंस नेगेटिव साइन है, यू विल से दैट एनर्जी इज इंक्रीजिंग. So if you have to take it from R1 to R2 here, you need to supply it with some extra energy. ठीक है. सो R2 में अगर आप ले जाते हो, आप कहोगे टोटल एनर्जी फाइनल कितना है? सो -G(me)m/R2, एंड नेट एनर्जी रिक्वायर्ड इन डूइंग सो विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ओके, सो दैट वे यू कैन कैलकुलेट हियर. जैसे इनिशियली रेडियस छोटा है, फाइनली बड़ा है, so actually you need to supply it with energy, and that amount, I mean amount by which you need to supply, I mean, amount that you need to supply is difference of these two energies, right? Nothing else. So that difference you need to reflect here, and that difference you need to equate as, जैसे यहाँ पे मैं ये बोलूंगी Gme small m, and this one I will be writing as 1/R2. No, this is 1/R1 minus 1/R2, and this is equal to x into 10 to the power 7. So if you have required value, you can put it and you can get the answer. Okay. So this is sorted. Now let us talk about this one. Again, ये question भी बहुत ज्यादा तोप नहीं है. Simple एक particular चीज है जो तुम्हें याद रखनी थी. So I will let you know. A curve is given showing the potential energy U of particle as a function of position. So U versus X का graph given है. Slope given है. देखो different positions का. And these are the forces acting. FAB along this line force, I mean in this duration, or when potential energy is getting indicated by AB line, force is FAB, and so on, FBC, FCD, FDE. We have to arrange magnitude of forces in decreasing order. फोर्स को आप यूएक्स ग्राफ से कैसे निकालते हो, और फोर्स को यूएक्स से कैसे निकालते हो? फोर्स इज -du/dx, if you remember. It is this one, right? So if you have to talk just about the magnitude, just talk about the slope. So here, I mean, u versus x का जो slope होगा, that will give you the force. So if AB will be equal to tan theta 1, so if AB magnitude wise, this is 1 Newton, and if BC is equal to how much? That is your tan theta 2, that is 3 Newton, and if CD is equal to 0, because slope of this line is 0, so this is 0, and if finally this is DE.
So DE का tan theta 3 is minus half. Magnitude wise, I will say half Newton. Okay. So now arrange it in forces in decreasing order. So सबसे पहले maximum को आप लिख लो FBC greater than FAB. So this is this and greater than FDE and greater than FCB. So second one looks correct. Now let us deal with this last question. So what is said in here, water is flowing through a venturi meter as shown in figure. The cross-sectional area at points A and B are A and a small a with A by A is equal to 2, A is equal to this one. Okay. Density of water is given. Find the volume flow rate of water. So volume flow rate कहने का मतलब क्या? You are asked to calculate A into B. That is velocity, area of cross section into velocity. So at any point, if you know area of cross section and velocity of water at that point, you are done with the volume flow rate of water. Okay. So how we can do that here? A by A का देखो ratio दिया हुआ है, velocity की बात नहीं हुई है. So we need to talk about velocity here. So if we apply Bernoulli's principle at these 2 points, एक point ये ले लो, दूसरा point ये ले लो. So इस point पे pressure, I mean let us say P1 plus half rho V1 का square, let's say velocity is V1 and this will be equal to pressure at this point, let's say P2, this is P2 and plus half rho V2 का square. I mean this venturimeter is kept at same horizontal level, इसलिए height के factor को मैंने count नहीं किया है, that we generally don't do while dealing with venturimeter. So this is this thing, okay. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे डायग्राम में कुछ ऐसा दिया हुआ था, दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द कॉलम लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो P1 माइनस P2 दैट इज गोइंग टू बी रो जी एच. तो यहाँ आप लिखोगे रो जी एच एंड दिस इज इक्वल टू हाफ रो एंड दिस इज V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. तो यहाँ से रो रो कैंसिल होगा एंड दिस इज 2GH. ओके. So V2 square minus V1 square is equal to 2GH. Now use the continuity equation at these 2 points. Okay. So what you will be doing, A V1 is equal to small a V2. And A by A is already known, that is your 2. So this is 2V1 is equal to V2. Now, I mean, you're having two equations, right? This is 2V1 is equal to V2. This is second equation. And this is your first equation. Put the things, you will be getting V1 is equal to what, V2 is equal to what. You can calculate. And then you can do A into V. So area of cross section value is, area of cross section value is given. Yeah. So A का value is given. So you calculate V1. So if you calculate here V1, जैसे मैं यहाँ पे calculate करके दिखाती हूँ, V1 का value हमें निकालना है, right? So V2 को आप put कर दो 2V1. So this will become 4V1 square minus V1 square. So that is 3V1 का square is equal to 2GH. And V1 का square, यानी कि V1 will be equal to root under 2GH by root 3. Okay. And volume flow rate will be equal to AV1. A is root 3. So that is nothing but 2GH root under. Okay. So 2 into 10 into H कितना था तुम्हारा 5 centimeter, I guess. So 5 into 10 to the power minus 2. So this is 5 into 2, 100. 5 into 2, 10. 10 into 10, 100. 100 into 100, 10 to the power minus 2. That will become 1. So this is 1. So 1 unit will be your answer. Okay. तो दिस वाज दिस थिंग. देखो क्वेश्चन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो जैसा आता है वैसे ही आया था. क्वेश्चन बहुत इजी था. अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी ठीक हो एंड यू हैव प्रैक्टिस PYQ, यू कुड हैव इजीली आंसर 20 क्वेश्चंस. इजीली सारे क्वेश्चंस तुम्हारा वन स्टेप एप्लीकेशन थे. जैसा कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत ज्यादा तोप नहीं था. आई मीन यू जस्ट नीडेड टू नो द बेसिक. एंड अगर आपको बेसिक पता है, फॉर्मूला पता है, देन यू कैन इजीली क्रैक ऑल द क्वेश्चंस. डन है. सो 20 करना तो बहुत आसान था. 5 में इसलिए लीव कर रही हूँ, मे बी विद द स्पीड थिंग और एग्जाम प्रेशर एंड ऑल. अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते. क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना आसान. ठीक है. सो या 20 तो कर ही सकते थे. नॉट 20 देन 18 फॉर श्योर. डन है. सो या आई होप जिनका एग्जाम अभी भी रिमेनिंग है, दे विल ब्रश अप थिंग्स. I mean, they will practice more questions and they will go through formulas properly. कि वो काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इक्वेशन कैसे लिखते हैं ऑल. इफ यू नो दैट वन क्वेश्चन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू. एंड ऑल्सो फ्रॉम द लॉजिक गेट थिंग, वहां से भी थोड़ा गेट को आप प्रैक्टिस कर लेना. यू विल बी गेटिंग वन क्वेश्चन डन. एंड फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स 3 to 3 क्वेश्चन. मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है, सो यू कैन इजिली गेट दैट डन.
anyway, everything depends on your preparation and whatever you have done in last 4 or 5 months. Okay. So yeah, I wish you all, everyone, very best. Uh, and yeah, keep reading. Still, if you're done, finished with the exam, JEE Advance is there. And if you couldn't perform better in this JEE Mains first, then start preparing for second session. Okay. So always, I mean, be behind getting better. Okay. So yeah, take care of yourself. Bye bye.